Let us all put our hands together. This time we have to close our eyes though and bow your heads. Please do not look at the altar until Guruji says to do so. Om Namostute Vyasa Vishala Buddhi Pullara Vindayata Patra Netraha Enatvaya Bhalata Taila Purnam Prajwalitu Jnanamaya Pradipaham Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namam Vasudeva Sutam Devam Kansachanura Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagataguru Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraye Sri Govindaya Namo Namaha. एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय. Take a look at Krishna Bhagavan devotees. बोलो बाके बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की. Give your Bhagavan a round of applause. Jai Bhagavan. Please take your seats. I will talk to you for 2 or 3 minutes, and then you will have the opportunity to come to make your offerings to Bhagavan Krishna. Devotees, Bhagavan Krishna, his coming, his avatar is called Purnavaha avatar. What does that mean? It means it was a complete incarnation of Bhagavan Vishnu. The avatar of Prabhu Sri Ram, it was a shared incarnation. You had Sri Ram, Lakshman, Bharat, Shatrughan. How do you know it's a shared avatar? When Agindev appeared with the vessel filled with kheer, that was the energy and Shakti, total energy and Shakti of Bhagavan Vishnu. But it was shared. Half of it was given to Queen Kaushalya. That was Sri Ram. 50% of that energies of Bhagavan Vishnu was Sri Ram. 1/4 was taken and given to who? Kaikeyi, my dear devotees. Other half was given to Queen Sumitra. But that was not given just like that as a quarter. It was made into 2 parts. And Queen Kaushalya and Kaikeyi joined hands together and gave it to the 2 queens, the final queen, who was called Queen Sumitra. From that came, my dear devotees, Lakshman and Shatrughan. So it was shared, my dear devotees. Bhagavan Krishna, complete incarnation. Those murtis that you see, look how very beautiful Bhagavan Krishna and Radha looks. Identical murtis to those were sourced by Prakashji, Sumati, myself, Guru Mai, couple of us, going to Jaipur where they make these murtis. We look at them and say, this is the murti we want. This is what we want. But devotees, prior to this, it is just a piece of marble, you know. But when the Pandits will come, where's Pandit Roshan? Oh, Pandit Roshan. And we all join together in performing what is called Pran Pratishta Puja. We ask that the eyes be open, that they can see. Right now, Bhagavan Sri Krishna is looking on Radha Devi. He's hearing, they are hearing. Through this lips, my dear devotees, that we have touched, you know what is happening? They are giving blessings, Ashirvad. Heart is beating, all of these. So we have given life to these murtis. When you give life to these murtis, it is called a commitment. Commitment by all of us who are here present today.
Not only this family, but all of us who are present here today, that is a commitment. Automatically. That's why we say Bhagavan, you know. You think of mystical and magical just like that. Why do you say Bhagavan? Bhagavan means that they are, just as you say, Tvameva Mata Cha Pita Tvameva, Mother, Father, Tvameva Bandhuscha Sakhat Tvameva, Tvameva Vidyat Ravinan Tvameva, Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. They are everything to you in this world. But I add one more to it. They also have become our children. They are our children. We have to feed them. Listen closely to what Guruji is saying. We have to feed them. We have to clothe them. We have to bathe them. We have to put, just as you decorate yourself with so much very beautiful jewelry and so, you have to bring jewelry from time to time and put for your murtis. Make them happy, make them comfortable, get nice malas for them, come and do arti for them. They are sitting and waiting now. This is what we have created here today. We have invited Bhagavan to come here to bless us, but so we can continue to serve Bhagavan. That is not Nadira job from after tomorrow, you know, to come here and clean the murti, although Guruji tells Shishya to come and do it. But you know something? This is the prerogative of all of us. Temple may not be open, but you can make a little call and say, you know something, I want to come and do a little offering to Bhagavan Krishna. I want to bring clothes for the murti, I want to bring prasadam, and all of these things. Most welcome, my dear devotees. And this is how we operate when we, as I spoke to you a minute ago, on making tangible contributions to your Sanatan Dharam. My dear devotees, we have to light diyas there. We need to put ghee for havan. We need to put oil for the diyas. We need to put wicks, my dear devotees. There's a recurring expenditure all the time in the temple. And you know what? We as Sanatanis Hindus must come forward and make sure that we have our place of worship as being the best, my dear devotees. Just as we want the best in our homes, our place of worship like this should also be the best. It has to be number one. My father used to say, the magical and mystical hands of a very unassuming chela that we have, called Mr. Dev Jamuna, creates all of this that you see here. Not only this temple, you know, you go across Trinidad and Tobago, and wherever Dev would have put his hand, you could easily recognize it. You know why? It stands out amongst anything else that you can ever imagine. That's why his guru, my father, always say to him and say to everyone that he came into contact with, you must not be just another person. You have to be an exceptional person. Whatever our endeavors are in life, we always have to be number one, my dear devotees. We have to excel and we have to be number one in whatever we do, my dear devotees. I can continue to talk. I can tell you so many things of Krishna Leela. What can I tell you profound of Krishna Leela? I told my chelas Vinu and Tony this morning. One avatar runs into the other. It's called continuity. Just as your Sanatan Dharam is handed down from one generation to the next, we call it Parampara. So too, my dear devotees, one avatar runs into the other. We say, Satyuga metam satya kahayo, Bhagavan Vishnu and Mahalakshmi Devi Ma. It was in the golden age where 100% truth prevailed. Then Bhagavan Vishnu realized, my dear devotees, how stringent that sort of life is.
So he flexed a little bit. He came as who? Treta me Sri Ram. Yug number 2, which is called Treta Yug. He came as Madhyara Purushottam, Prabhu Sri Ram, and Mother Sita. We know the life. We know those who performed tapasya, who performed devotion with faith, shraddha, bhakti, or prem. Patience might be very bitter, children, but the fruit that comes from it is always very sweet. Always have patience. Patience is a great virtue. Not many people. We get over anxious in life. We just want things to happen. Just want things to happen all the time. Oh, things happen, but we want it to happen our way. Are we selfish? Don't we give Bhagavan a chance to make certain decisions? No. We want to make decisions and we want to tell him what we need. Then he is not Bhagavan. He dispenses, my dear devotees, in a very just manner. So when Sri Ramchandra Bhagavan came, there's a beautiful episode. Came the time for the building of the bridge. Do we know the building of the bridge? Katha. From India to Sri Lanka, Savyojan. That building of the bridge, my dear devotees, caused Krishna Bhagavan Leela to kick off as well. Hanumanji saw all of them bringing little rocks and putting. He even saw a little squirrel with his hind leg pulling 2, 10, 12, 15 grains of sand. Hanumanji, look how easily we get caught up in not thinking straight sometimes. Hanumanji, in his own wisdom, and I guess the love for God also, he is thinking to myself, what is this little squirrel doing here? What could 10 grains of sand do in building a bridge? So he walked up to the little squirrel and said, hey, listen to me, my friend. If you don't look out, you're going to get squashed here. You're going to be trampled upon and you are going to be history. You know what happened? Sri Ram saw him. That's the Leela of Bhagavan. He says, Hanuman Baba, come. He says, however insignificant, however small you think the contribution of that squirrel is, appreciate it. How many of us appreciate the contributions of people? Your little arti that you may put when you come to a mandir may seem small, but that plate is going to be filled one day. So we want you to make contributions. Nothing is insignificant. Hanumanji now, when he looked up north, he saw the peak of the Himalaya. That place is called Govardhan. When he saw the peak of the Himalaya mountain there, he says, you know something? Let me go and bring that big mountain and wrap up this building of the bridge very quickly. I cannot let my Lord sit and wait any longer. It's time for him to cross. Bhagavan Leela. So you sit and look at the Leela of Bhagavan as it unfolds in front of you, my dear devotees. You know what happened? As soon as he lifted up that mount, Govardhan, and started coming this way, coming to the south, Bhagavan Sri Ram says, no more materials. Bridge is completed. I want no more materials. Hanuman Baba put down Mount Govardhan. And where did he put it down? In Vrindavan. He put down Mount Govardhan in Vrindavan. But when he put it down there, Govardhanji took the form of a Brahmin and he said to him, my friend, Hanuman Baba, you told me you're going to take me for Sri Ram Darshan. Are you going to forsake me? Vrindavan. You're going to take me in the forest of Tulsi and just leave me here in the middle of nowhere? Sri Ram knew, my next avatar is coming, Bhagavan Krishna. And that's where the whole Leela is going to circle around, my dear devotees. So he said, listen to me. I know I promised I was taking you to Sri Ram. But Sri Ram Bhagavan says,
no more materials, and I only listen to the orders of my master. Translate that in your life. Do you listen to the orders of the master? Children, do you listen to your parents? Dulahin, do you listen to your Dulaha? All right, yes, okay. Now, Dulaha, do you listen to your Dulahin? That is a serious thing now. All of a sudden, everybody gets serious. So devotees compromise, sacrifice, listen. So when he went to Sri Ram, he says, Govardhan is crying. Tears are coming down his cheeks. And he said to me that he was expecting to have your darshan, Prabhu. I placed him down there on your orders. What should I go and tell him? Sri Ram smiled. He says, Hanuman Baba, you go and tell Govardhan Ji. As Guruji talked to you, flash your eyes also on Krishna Bhagavan and Radha Ji. That is the Leela he speaks of. You know what he said? He says, Hanuman Baba, go and tell Govardhan Ji that my next incarnation is coming, Sri Krishna. And when the next incarnation comes, you see, if you bring him here now, I will have to walk upon him to cross. I don't want anybody's feet to touch Govardhan Ji. But in the next incarnation, when I come as Krishna, and Indra want to have anger and ego, which is called Krodha and Abhiman, I am going to lift that mount with my little finger for 7 days and 7 nights. When we think that we are a mighty person, my dear devotees, just remember one word. I don't have the time to elaborate on it. Whenever we think that we are mighty, or whatever we think makes us mighty. Anilji says, the house, the car, all of these things, sometimes the ego makes us think that we are mighty. Just remember one word, and it does what, devotees? It brings humility to you. And that word, however mighty I think I am, there's always something called Almighty. Almighty is Bhagwan. That's the biggest one. So you will be humbled anytime you think there is a power, an energy, and a force that is greater than me. And if we don't understand that there is an energy and a power greater than me, my dear devotees, we'll always be lost in the world. We'll be lost in the world. You know? My dear devotees, he says, that is where it's going to be. Today, my dear devotees, we continue to do puja to Bhagavan Krishna, to Sri Radha Devi Mata. Always know, my dear devotees, here is a place, Sri Ram Vijay Mandir, that you can come at any time. You are always welcome to come and be a part of everything that is going on here, my dear devotees. So I would like to say to you, may Bhagavan guide you, bless you, protect you. Those of you who brought prasadam, who would like to come and do arati, make little offerings, you can please come now and we'll have this done. But listen to this very beautiful bhajan. Bhagavan meri naiya उस पार लगा देना. Very beautiful bhajan, devotees. संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाट कभी तुम भी मुझको न भुला देना. Sometimes I forget you, Bhagavan. The maya of this world gets the better of me. संभव है झंझटों में. भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तू निभाया है आगे भी निभा देना. बोलो भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब
अब तक तू निभाया है, आगे भी निभाया है। संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं प्रभु जी, संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कभी तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तू निभाया है, तू निभाया है, आगे भी निभा देना। आगे भी निभा देना। तुम इष्ट में उपासक, तुम पूज में पुजारी, ओ प्रभु जी तुम इष्ट में उपासक, तुम पूज में पुजारी, यदि सत्य है तू स्वामी मुझे करके दिखा देना। ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तू निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तू निभाया है, आगे भी निभा देना। प्रभु रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। Please devotees, you can come up to the murtis. Anyone wishing to come to do arti or whatever, the murtis, please come up. मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएंगे, नजर तुम्हें लग जाएंगे यो प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएंगे। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएंगे, नजर तुम्हें लग जाएंगे। तेरी सूरतिया पे मन मुराद का, प्यारा लगे तेरा पीला पतका। तेरी सूरतिया पे मन मुराद का, प्यारा लगे तेरा पीला पतका। तेरी मेरी ये जान, तेरी तेरी मेरी जान, तू इतना नजर तुम्हें लग जाएंगे, नजर तुम्हें लग जाएंगे ओ प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएंगे। तेरी मुरलिया पे मन मुराद का, प्यारा लगे तेरा नीला पतका। तेरे मुरलिया पे मन मुराद का, प्यारा लगे तेरा नीला पतका। तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना
ही लग जाएंगे, नजर तो ही लग जाएंगे ओ प्यारे, नजर तो ही लग जाएंगे। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएंगे, नजर तो ही लग जाएंगे। तेरे कमरिया पे मन मुराद का, प्यारा लगे तेरा काला पतका। तेरे कमरिया पे मन मुराद का, प्यारा लगे तेरा काला पतका। तेरे गल में बजंती माँ, तेरे गल में बजंती माँ, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएंगे, नजर तो ही लग जाएंगे ओ प्यारे, नजर तो ही लग जाएंगे। जय गोविंद जय गोपाला, बंसी बजाए मुरली वाला। जय गोविंद जय गोपाला, बंसी बजाए मुरली वाला। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएंगे, नजर तो ही लग जाएंगे, नजर तो ही लग जाएंगे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दूर गुण को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षा, ब्रह्मचारी धर्म रक्षा, फिर व्रताधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य सेवा करें। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य सेवा करें। सत्य बोले झूठा त्यागे, सत्य बोले झूठा त्यागे, नेहापसामन करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी के हम किसी से भूल करना भी करे। निंदा किसी की, निंदा किसी की हम किसी से भूल करना भी करे। दिव्य जीवन हो हमारी, दिव्य जीवन हो हमारी, याश तेरा ज्ञान करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको
जय जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल। कृष्णा 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 कृष्णा, जय राधा कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, जय राधा कृष्णा, जय जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल। पंछी बोले हे राधे कृष्णा, मीरा बोले जय हरि कृष्णा, पंछी बोले हे राधे कृष्णा, मीरा भोले जय हरि कृष्णा, जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल। गोविंद गोविंद भजु राधे गोविंद, गोपाल गोपाल हरे कृष्ण मुकुंद, गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद, गोपाल गोपाल हरे कृष्ण मुकुंद, गोविंद गोविंद भजु राधे गोविंद, गोपाल गोपाल हरे कृष्ण मुकुंद, गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद, गोपाल गोपाल हरे कृष्ण मुकुंद। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम। जय जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, बोलो जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल। ॐ गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। ॐ गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। ॐ गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। ॐ गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। ॐ गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। ॐ गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया।
बापा मोरिया। ओम गम गणपतिये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरिया। ओम गम गणपतिये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरिया। ओम गम गणपतिये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरिया। ओम गम गणपतिये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरिया। ओम गम गणपतिये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरिया। ओम गम गणपतिये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरिया। ओम गम गणपतिये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरिया। गणपति बापा मोरिया। गणपति बापा मोरिया। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीर पराये जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीर पराये जान रे। पर दुखे उपकार करे तूने। पर दुखे उपकार करे तूने। मन अभिमान नान रे। वैष्णव सकल लोक मां सहुने बंदे। निंदन करे रे। वाच काच मन निश्चल राखे। वाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीर पराये जान रे। समदृष्टि ने तृष्ण त्यागे। पर सृजे ने मात रे। जीव भात के असत्य न बोले। जीव भात के असत्य न बोले।
पर धन न जाने हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जान रे, वैष्णव जन तो जो तुम मिटाना चाहे जीवन की कृष्णा, जो तुम मिटाना चाहे जीवन की कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, जो तुम मिटाना चाहे जीवन के कृष्णा, जो तुम मिटाना चाहे जीवन के कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग में हो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग में हो हारा हारा। मन का मिटे धियारा बोले कृष्ण कृष्णा, मन के मिटाया धियारा बोले कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तुम मिटाना चाहे जीवन के कृष्णा, जो तुम मिटाना चाहे जीवन के कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण। जिसको मिले न पीरा सुख का मरम क्या जाने, जो न ध्याए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म का माने। जिसको मिले न पीरा सुख का मरम क्या जाने, जो न ध्याए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म का जाने। चाहे अगर उजियारा बोले कृष्ण कृष्णा, चाहे अगर उजियारा बोले कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तुम मिटाना चाहे जीवन के कृष्णा, जो तुम मिटाना चाहे जीवन के कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। छोड़ दे भटकना डर डर, छोड़ दे अहम का अंधेरा, भूल जा जगत के विभवा जग के दुखों का अंधेरा। छोड़ दे भटकना डर डर, छोड़ दे अहम का अंधेरा, भूल जा जगत के विभवा जगत जग है दुखों का अंधेरा। फेरता है मारा मारा बोले कृष्ण कृष्णा, फेरता है मारा मारा बोले कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तुम मिटाना चाहे जीवन के कृष्णा, जो तुम मिटाना चाहे जीवन के
कृष्ण सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जय जय कपीशा जय जय कपीशा जय कपीशा हनुमंता। जय जय कपीशा जय जय कपीशा जय कपीशा हनुमंता। जय जय कपीशा जय जय कपीशा जय कपीशा हनुमंता। जय जय कपीशा जय जय कपीशा जय जय कपीशा हनुमंता। राम भक्त रामदूता राम भक्त रामदूता राम भक्त रामदूता राम भक्त रामदूता। ज्ञान पंडित महावीरा जय जय कपीशा जय जय कपीशा जय कपीशा हनुमंता। जय जय कपीशा जय जय कपीशा जय कपीशा हनुमंता। जय 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 कपीशा जय कपीशा जय जय कपीशा हनुमंता। जय जय कपीशा जय जय कपीशा जय कपीशा हनुमंता। सच्चिदानंद प्राणदेवा सच्चिदानंद प्राणदेवा सच्चिदानंद प्राणदेवा सच्चिदानंद प्राणदेवा। हनुमंता जय हनुमंता। जय जय कपीशा जय जय कपीशा जय कपीशा हनुमंता। जय जय कपीशा जय जय कपीशा जय कपीशा हनुमंता। जय जय कपीशा जय जय कपीशा जय कपीशा हनुमंता। वायुदेव वानर वीरा वायुदेव वानर वीरा अंजनेय आंगन तनया। जय जय कपीशा जय जय कपीशा जय कपीशा हनुमंता। जय 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 कपीशा जय कपीशा जय जय कपीशा हनुमंता। जय जय कपीशा जय जय कपीशा जय कपीशा हनुमंता। जय जय कपीशा जय जय कपीशा जय कपीशा हनुमंता। भजो घन श्याम भजो मुरली गोपाल भजो। भजो घन श्याम भजो मुरली गोपाल भजो। भजो घन श्याम भजो मुरली गोपाल भजो। नंदा की लाल भजो राधे नंदा की लाल भजो राधे नंदा की लाल भजो राधे नंद की लाल भजो राधे। भजो घन श्याम भजो मुरली गोपाल भजो। भजो घन श्याम भजो मुरली गोपाल भजो। नंदा की लाल भजो राधे नंदा की लाल भजो राधे। गिरिधर गोपाल मथुरा नाथा गिरिधर गोपाल मथुरा नाथा। कमल नयन है कैबाल धामा कमल नयन है कैबाल धामा। भजो घन श्याम भजो मुरली गोपाल भजो। भजो घन श्याम भजो मुरली गोपाल भजो। नंदा की लाल भजो राधे नंदा की लाल भजो राधे। गिरिधर गोपाल मथुरा नाथा गिरिधर गोपाल मथुरा नाथा। कमल नयन है कैबाल धामा कमल नयन
भजो भजो घनश्याम भजो मुरली गोपाल भजो नंदा की लाल भजो राधे नंदा की लाल भजो राधे नंदा की लाल भजो राधे नंदा की लाल भजो। मुझको नवल उदान दो माँ सरस्वती वरदान दो मुझको नवल उदान दो माँ सरस्वती वरदान दो मुझको नवल उदान दो माँ सरस्वती वरदान दो मुझको नवल उदान दो माँ सरस्वती वरदान दो। माँ शारदे हंसासनी वागेश्वरी नवारिणी माँ माँ शारदे हंसासनी वागेश्वरी नवारिणी मुझको अगम स्वर ज्ञान दो माँ सरस्वती वरदान दो मुझको नवल उदान दो माँ सरस्वती वरदान दो। निष्काम हो मन कामना मेरी सफल हो साधना निष्काम हो मन कामना मेरी सफल हो साधना धनी सानी सा धनी सारे गा रे गा सारे गा मरे गा सानी धनी सारे गा रे सा नव गति नयन दान दो माँ सरस्वती वरदान दो मुझको नवल उदान दो माँ सरस्वती वरदान दो। यह विश्व ही परिवार हो सबके लिए सम प्यार हो यह विश्व ही धनी सानी सा धनी सारे गा रे सा सारे गा मरे गा सानी धनी सारे गा रे सा आदेश लक्ष्य महान दो माँ सरस्वती वरदान दो मुझको नवल उदान दो माँ सरस्वती वरदान दो। सा सा धा प म रे ग रे ग रे सा सा म म प धा नि सा धा प म मुझको नवल उदान दो माँ सरस्वती वरदान दो माँ सरस्वती 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 मुझको अगम स्वर ज्ञान दो सा सा धा प म रे
सधा पमा मुझको न बलभू दान दो माँ सरस्वती वरदान दो माँ सरस्वती वरदान दो माँ सरस्वती वरदान दो माँ सरस्वती वरदान दो। वीरा हनुमानाति बलवाना राम राम रसिया रे हे प्रभु मन बसिया हे वीर हनुमानाति बलवाना राम राम बसियो रे हे प्रभु मन बसिया रे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की 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 बोलो। वीरा हनुमानाति बलवाना राम राम रसिया रे हे प्रभु मन बसिया रे वीरा हनुमानाति बलवाना राम राम रसिया रे हे प्रभु मन बसिया रे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। वीरा हनुमाना अति बलवाना राम राम रसिया रे हे प्रभु मन बसिया रे वीरा हनुमाना अति बलवाना राम राम रसिया रे हे प्रभु मन बसिया रे। बजरंगा बली बजरंगा बली बजरंगा बली बजरंगा बली बजरंगा बली ओ बजरंगा बली बजरंगा बली ओ बजरंगा बली बोलो जय 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 हनुमान बोलो जय 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 हनुमान बोलो जय 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 हनुमान बोलो जय